Assalamu alaikum. We are going to start with chapter 6 equations and rearranging formula. We are going to start with activity exercise 6.1 in this chapter, but let's see what we have to know and understand before solving the exercise. So you should be familiar with this algebra work. This is basic algebra that if you have to multiply y with y minus 3, what you do is you firstly multiply y with y and then you multiply y with minus 3, and that's how you will get the answer. You should know how to solve these equations, these basic equations. Similarly, 2 will be multiplied with 2x and it will also be multiplied with 4, and 4x plus 4 2x minus 10, and you just have to shift them one place to another to get the final output. That's the basic understanding of the previous equations, linear equations. Now we have to see in 6.1 we have to learn how to further expand the brackets. We call it expansion, and it is basically we have to remember that a plus and a negative is attached to a number immediately following it and should be included when you multiply out brackets. This is a very important thing because whenever you have to multiply minus 3 with a number, you have to make sure that you are going to multiply it with minus 3. तो आपको साइन का भी ख्याल रखना है साथ में. So it's going to be minus 3x, and this minus 3 will be also be multiplied with plus 4, so it will become minus 3 multiplied by plus 4, and it will give you the result as minus 12. Don't forget this negative sign and do not answer it something like some people tend to answer it like minus 3x plus 12. They forget that they have to multiply the signs as well. So plus multiplied by minus will be minus, right? That's how it works. And there are a few couple other practice expressions as well. You can look at the worked examples. So let's just hop on to exercise now. Let's do them all of it one by one, starting with question number 1. Expand each of the following and simplify your answer as far as possible. The A part says minus 10 3p plus 6. Minus 10 will be multiplied with 3 minus 30p. Minus 10 will be multiplied with 6. It's going to be minus 60. And now we need to see that this is already simplified. We cannot simplify it further. So that's it. That will be the answer for this part. It's going to be, let me just uh, write it over here, minus 30p minus 60. And let's use a pink color now. So for B part, it says minus 3 5x plus 7 minus 3 5x plus 7. How are we going to do is we are going to multiply it inside minus 15x. Minus 3 will be multiplied with plus 7. So plus into minus will be minus 3 into 7 is 21, and that is done, and we cannot simplify it further, so this is going to be the answer. For a C part, it says minus 5 4y plus 0.2. Do not worry about the decimal places, it will still work the same. Minus 5 will be multiplied with 4 will be minus 20y, and minus 5 multiplied by plus 0.2 will become minus 5. 5 into 0.2 is basically 5 into 0.2 is 1. Okay, so it's going to be 1. Minus 25 minus 1. Next we have D part, that is minus 3q minus 12. It's very simple. Minus 3 will be multiplied with q, minus 3q minus 3 multiplied by 12 will be 12 into 3 will be 36. So minus 3q plus 36. Now for the e part, minus 12 2t minus 7. Minus 12 will be multiplied with 2t, it will become minus no, not 12. Hmm. Make sure you keep an eye on my mistakes so you know how to solve them. Minus 12 multiply by minus 7. माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा. 12 into 7, when we'll do that we'll get 84. I have a very good math, mental math. मुझे टेबल्स आते हैं. Minus 24t plus 84. This will be the part answer for part E. Now we have F part. F part के अंदर क्या है? Minus 1.5 8z minus 4.
अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ से मूव कर लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा बस अब। ठीक है, तो ये है हमारे पास -1.58z-4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारी मर्जी है, अगर मैं चाहती हूँ मैं इस डेसिमल प्लेस को फ्रैक्शन में कर दूँ तो मैं कर सकती हूँ, because we all know that 1.5 is basically 3/2, and it will be easier to multiply something when we have a fraction rather than a decimal. So when we multiply this, we can write it like this: -3 into 2, 3/2 multiplied by 8z। अब ये जो माइनस है, ये अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब ये 2 हमारा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इसी तरह 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। So we will get -3 into 4 -12z plus 3 into 2 will be 6. So the answer will be -12z plus 6. Or you can also, take 6 as a common and then solve it, but it is sufficient. If you write it like this, it is more than sufficient. Uh-oh. Question number 2: expand each of the following and simplify your answer as far as possible. The same question. How are we going to do it? -3 multiplied by 2x. Let me just write it over here. So it is going to be -3 multiplied by 2x will be -6x. -3 multiplied by 5y will be -15y. So the answer will be -6x -15y. For B part, -6 multiplied by 4p plus 5q. So -6 will be multiplied by 4, which will become -24p, -6 multiplied by 5q will be -30q, and that will be the answer: -24p -30q. These are very simple questions and most likely to come in P1 as well. So make sure you do not use any calculator while solving these. So, and it does not even require any sort of calculator as well. So -9 multiplied by 3 will be -27h, -9 multiplied by -6k will become +9 into 6 is 54k. So answer will be -27h plus 54k. For D part, -2 5h plus 5k minus 8j. Even though numbers ज़्यादा हो गए, but it does not mean the process is going to be the utmost, the similar, exactly similar. -2 will be multiplied inside by each of the terms. So make sure to keep the negative sign along with it as well. So 5 -2 into 5 will be -10h minus 10k and plus 16j. That will be the answer for this part. Now we have to do the E part. For E part we have to see, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा terms है. 2a minus 3b minus 6c plus 4d. -4 multiplied by 2a will be -8a. When it is multiplied with -3b, it is going to become 12b. Here it's going to become plus 24c, and then when it is multiplied over here, it is going to become -16d. Let me write its answer over down here. Now for the F part, how we are going to solve it? It's the exact similar process. Just अब हमारे पास बेशक यहाँ पे ये आ गई हैं powers, but the process is exactly the same. -6 multiplied by +6 will be -36y square plus 12y cube, right? So let me just write it: -6x cube minus 36y square plus 12y cube. Now let's do question number 3. Question 3 also says the same. Let's start with it. 2 minus 5x plus 2. अच्छा, अब इसको कैसे करना है? इसमें 2 minus 5 है, तो 2 minus 5 को हम कैसे लेकर जाएं? Do we have to multiply 2 as well with each of them, या हम लोग सिर्फ 5 को कर रहे होंगे, -5 को कर रहे होंगे? We have to see.
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए। अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे होते तो कहानी हमारी डिफरेंट होती, उसमें भी कोई और चीज़ होती विच आई वुड हैव एक्सप्लेन। देखो अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे होते तो हमें ये भी देखना है ना यहाँ पे कोई वेरिएबल है या नहीं। अगर यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, 2 - 5 - 3 होता है, तो -3 को हम x+2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली। पर हम लोग इस केस में क्या कर रहे हैं, जिस केस में हमारे पास है 2 - 5x+2। अब इसके अंदर हमने -5 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना है, x के साथ भी और 2 के साथ भी। माइनस को भी साथ में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इट विल बिकम 2 - 5x - 10। 2 - 5x - 10 है तो -5x, -10 + 2 क्या होता है, -8। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, -5x - 8। अच्छा अब इसको देखो, अब ये तो है, ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसके अंदर बस हमारे पास साइन चेंज कर दिया उन्होंने। अब इसको कैसे करेंगे, 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, -5 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम -5x। और -5 अब जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 5 × 2 विल बी 10। तो अब फाइनल आंसर किस क्या होगा, -5x + 12, क्योंकि 10 + 12 बन गया ना, तो -5x + 12। Now for part C, how is it going to be like 14x - 3 -4x - 1. Up, as it is said, try not to carry out too many steps at once. Show every term of your expansion and then simplify. So be precise if you want. You don't have to rush and do things in your mind and then mess up them somehow. So it would be better if you just do them on spot, ठीक है। सारी slowly करोगे अगर 14 into x will be 14x, 14 multiplied by 3 will be 42, so -42। फिर यहाँ पे -4 है तो it will become -4x and -4 multiplied by -1 will be +4, so 14x - 4x will be 10x and -42 plus 4 is going to become 38 minus 38, so the final answer is 10x minus 38. Now for the D part, which is -7f plus 3 -3 2f minus 7, -7f minus 21 minus 6f plus 3 into 7 is 21, and then -7f minus 16f will become minus 13f, और -21 + 21 कैंसिल आउट हो जाएगा तो +0 हो जाएगा, so the final answer will be -13f, right? Now for the E part, what E part says, 3g minus 7, 7g minus 7 plus 2, 5g minus 6. Make sure you are putting the brackets at the right place. अब यहाँ पे हम 3g को कुछ नहीं करेंगे, 3g को हम as it is रहने देंगे। -7 will multiply with 7 will become -49g, and then it will going to become +49 plus 10g minus 12 -49। अब हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जीज हैं सारे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यू डोंट नीड टू बी वरीड बाय लुकिंग एट द जीज, हमारे पास ये जीज है, हम इसको एक्स भी लिख सकते हैं, सपोज कर सकते हैं जहन में। सो 3 - 14 -49 + 10 दैट्स गोइंग टू बी 14, ठीक है, -30, इट्स गोइंग टू बिकम -36g, एंड 49 - 12 इज गोइंग टू बिकम +37, ठीक है। So that's the answer. You can also write it like 37 minus 36g, but usually we write the variable first. So I'm just going to write -36g plus 37. Now for the F part, the final part of question number 3, x3y minus 5 minus 2 3y minus 5. We just have to multiply. 6 3 is 18, 18y, 6 into 5 is 30 minus 30 minus 2 into 3 will be -6y plus 10. So 18y minus 6y is going to be 12y, and 10 minus 30 is going to be 20. So 12y minus 20 is going to be the answer for this part. Now let's move on to question number 4, which is 4x
x minus 4 minus 10x 3x plus 6. How we are going to solve it? इसको बस मल्टीप्लाई करना है, अब x को भी साथ में पावर को भी करना है, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 जब होगा तो वो हो जाएगा 4 4 16 माइनस 60x माइनस 10x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम माइनस 30x. आर यू श्योर? x? नो, माइनस 30x स्क्वायर. और फिर यहाँ पे देखो मैंने कितनी जल्दी की प्लस लगाने की ऊपर देख के, पर हालांकि मैं ये भूल गई यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है. प्लस मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव विल बी माइनस 10x मल्टीप्लाई बाय 6 विल बी 60x. अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो डिफरेंट होगा बिकॉज माइनस 30 प्लस 4 इज गोइंग टू बी माइनस 26x स्क्वायर एंड माइनस 16 minus 60 will become minus 76x. So the answer for part A of question number 4 will be minus 26x square minus 76x. After question number 4, I'm going to remove all of this because this looks very messy. I do not like that anymore. Okay. अब यहाँ पे हम लोग b पार्ट करने लग गए हैं. 14x plus 7 minus 3x 5x plus 7. अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 14x को 14x स्क्वायर प्लस अब हमारे पास 7 into 14 7 12 is this. Okay, I'm just trying to 98, I think. Yeah, 98x 14 into 7 is 14x is x square हो गया और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 98x हो गया. 3x multiplied by 5x is going to be 15x square minus 3x multiplied by plus 7 is going to become minus 21x. Now 14 plus minus 15 is going to be minus x square और 98 minus 21 मैं इतना ओरली गलत नहीं करना चाहती, ठीक है, तो प्लस 77x, तो it will become minus x square plus 77x. Now for the part C, it is 18p, oh sorry, it is x square minus 5x 2x minus 6. अब अगेन हम लोग x square को as it is रहने देंगे, minus 5x square अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 10x square बन जाएगा और जब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 30x बन जाएगा. एंड अगर हम देखिए x square है, ये भी x square है, तो ये 1 minus 10 हो गया minus 9x square minus 30x. And that will be the answer, minus 9x square minus 30x. Now for the part D. Part D says 5q square minus 2q q minus 12 ये क्या लिखा गया है? Okay, q minus 12 minus 3q square. अब इसमें बस अच्छे तरीके से नीट लिखेंगे ना तो चीजें समझ आएंगी. माइनस 2q को अब q से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा माइनस 2q स्क्वायर. बिल्कुल जैसे x को डील कर जैसे वैसे डील करेंगे. अभी माइनस 2q को अब हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 12 से मल्टीप्लाई करना है याद से, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 12 इंटू 2 इज 24 और q आ जाएगा और साथ में माइनस 3q स्क्वायर. अब 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0, तो हमारे q स्क्वायर खत्म हो जाएंगे एंड द फाइनल आंसर वी विल गेट इज 24q. तो डी पार्ट का आंसर सिर्फ 24q होगा. Now we hop on to E part, that is 18pq minus 12p 5q minus 7. अब इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? माइनस 12 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 12 into 5 is 60q minus 12 plus 7, oh sorry, multiply by 7 is going to be 84 plus 84p. तो अब इसका जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा कि माइनस, ओह देयर इज वन मोर थिंग, मैंने एक मिस्टेक किया है. कैन यू फाइंड इट आउट? It's not going to be 18pq minus 60q, it's going to be 60pq plus 84p. मैंने इस p को भूल गई थी जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करी थी, so do not do mistake like this. And 18 minus 60, let me do it quickly, and that's going to be minus 42pq plus 84p. So minus 42pq plus 84p. And for the f part,
it is going to be 12m 2n minus 4 minus 24n m minus 2. 12m multiplied by 2n, it's going to be 24mn minus 4 into 12 is going to be 48m minus 24mn. अब मैं एक दफ़ा दोबारा देख लेती हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं करी. 12 into 2 12mn, 12m into minus 4 will be minus 48m minus 24mn plus 24 into 2 is 48n. Yeah, so 24mn and 24 minus 24mn will cancel out, and the final answer we will have will be 14n minus 48m. So this will be the answer for part F, 48n minus 48m, and I'm going to remove all of it at once because wow, it looks good. Now we can entirely focus on question number 5, and it's the same as above. If I look at this, अगर हम लोग मैं यहाँ पर इसके आंसर सॉल्व करती जाऊंगी तब भी ये हो जाएगा 8x minus 6 2 into 3 will be minus 6 and minus 2 multiply by minus 2x, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा. 2 into 2 will be 4x, so 8x plus 4x, that's going to be 12x. So 12x minus 6 will be the answer. Now erase that and write 12x minus 6. अब अगर बी पार्ट को देखा जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ. 11x minus 6 minus 2x. अब इसके तो माइंड थिंकिंग यहाँ पे तो कोई वर्ड है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ. इट्स -1 basically. So you have to multiply negative inside everything, and you have to change every elements or every digits sign. So 11x minus 6 minus into minus will become plus, and it will become plus 2x. 11x plus 2x is going to be 13x minus 6. That's the answer. अच्छा, let me do the A C E G I K पहले और उसके बाद ये नेक्स्ट वाले करते हैं. It's easier to follow this way. ठीक है. So 4x plus 5 minus 3 2x minus 4. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंपली 4x plus 5 minus 6x plus 12. 4x minus 6x is going to be minus 2x. 5 plus 12 is going to be 17. So minus 2x plus 17 is going to be the answer. Now part E. In the part E, what is going is 15 minus 4 x minus 2 minus 3x. ठीक है, 15 ऐसे ही आता रहेगा. -4 अब इनसे अंदर मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, तो इट विल बिकम -4x plus 8 minus 3x. 15 plus 8 will become 23, right? 23 बनता है. -4 -3 जो होगा वो बना देगा -7x. तो हमारे पास 23 माइनस नहीं सॉरी -7x प्लस 23 आंसर होगा, क्योंकि हमने पहले वेरिएबल को रखना होता है. बट इट्स नॉट ए कंपल्सरी, रख देंगे तो बेहतर लगता है, अच्छा लगता है. अब हमारे पास जी पार्ट है. जी पार्ट में क्या हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ओके, तो इट विल बिकम 3x प्लस 15, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, -20 प्लस 4x. 3x plus 4x is going to be 7x. 15 minus 20 is going to be -5. So 7x minus 5 will be the answer for this part. Now for the I part, you can see 3x multiplied by x will become 3x square. 3x multiplied by -2 will become -6x. Minus x multiplied by x minus multiplied by x will be -x, and then it's going to be plus 2. 3x squared minus 7x plus 2 will be the final answer for this part. Now for K part, we have this, that 3 multiplied by 3x, 3x. 3 multiplied by -5 will become -15, minus 3 minus x. 3x minus x is going to be 2x,
and minus 15 minus 3 is going to be minus 18, so 2x minus 18 will be the answer for this part. Now for the D part, अब इसमें क्या हो रहा है, माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई होगा x से, तो 7 7 minus 7 minus 2x, right? 2x plus 2 इंटू थ्री, माइनस टू जब माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सिक्स बन जाएगा, और प्लस 3x। अब भी हमारे पास 7 प्लस सिक्स जो है वो हमारे पास बना देगा 7 प्लस सिक्स इज 13, एंड 3x माइनस 2x इज x प्लस सिक्स, x प्लस 13 जो है हमारे पास, इसका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 4x minus 2, 1 minus 3x minus 6. 4x as it is, minus 2 will be multiplied by inside, minus 2 will be multiplied by inside, it will become plus 2 into 3 will become 6x, और फिर माइनस सिक्स बाद वाला हमारा एज इट इज आता रहेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है। तो ये हमारे पास 4x प्लस 6x बन गया 10x, माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट हो जाएगा, तो 10x माइनस एट हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास h है। नाउ फॉर द पार्ट h, x minus 3 minus 2 x minus 4, x will be multiplied by inside x square, ये क्या हो गया, x square minus 3x minus 2x plus 4 2 is 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 जो है ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। फिर नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर क्या हो रहा है, 2x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट इज बिकमिंग 6x, 2x मल्टीप्लाई बाय x which will become 2x square, then it is becoming minus 3x and plus 6. I hope you're getting the hold of it much better now. So 2x square plus 3x plus 6 will be the answer for this one. And now for the last part, 2x multiplied by 3x will be 6x square plus 2x minus 2 into 3 will be 6 plus 2 into 2 will be 4x. So 6x square plus 6x minus 6, ये हमारे पास 6 जो ट्रिपल सिक्स है यहाँ पे ख़त्म हो गया, and that's how this entire exercise will be done. So exercise 6.1 is done here. If you have any problems or questions in it,